Yeah, hi Pradeep. Hi, good evening. Hi, Hi. how are So you? मैं ठीक हूँ प्रदीप। आई हो प्रदीप, आई रिसेंटली आप मुझे अभी ये इन्फॉर्मेशन आपने बताई है कि रिसेंटली यू हैव कंप्लीटेड 3 सर्टिफिकेशंस ना, सीके और सीकेडी और सीकेएस, CKAD. Yes, correct, राइट? correct. तो उन्हीं चीज़ को लेकर थोड़ा सा मैं ओपनली आपसे बात करूंगा अभी। वो कुछ Okay, पॉइंट्स, कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ डिफिकल्टी, कुछ सजेशन जो लोगों के लिए बेनिफिट देंगे आपकी बात में, राइट? तो okay. सबसे पहले तो मैं ये टेक्नोलॉजी पे आने से पहले आपका क्या एक तो प्रोफाइल थोड़ा सा बता पाओ लोगों के लिए कि आप जब इस ट्रैक पे आए थे तो उससे पहले आपकी करंट प्रोफाइल क्या थी? Oh, okay. So basically, before coming to Kubernetes cluster, Kubernetes related things, I was working as a administrator. So I have worked on a number of cloud. So you can say if you know about the OpenStack, CloudStack, VMware राइट। Cloud, VMware automations, and you can सो say Oracle Cloud, multiple अंडरस्टूड। things. तो क्लाउड कंप्यूटिंग So एक आपका स्किल्स रहा, इसके अलावा हाँ सॉरी, यू कैन correct. कंटिन्यू। ओके। So before, if I talk about my background, I'm near about working in all these things last 12 years, ओके। and last 7 year dedicatedly working on clouds. So my colleagues told me to basically do the Kubernetes. So I got the reference from my colleagues, Mr. Ram and KR Networks. ओके। So that I was joined. ओके। So after the complete all the sessions, so I get the confidence that I can do CKA, CKAD, and CKS वहाँ चलता because हूँ मैं अभी। हाँ वहीं okay, चलूंगा मैं, उससे पहले कुछ और बातें जो थोड़ा सा, तो जैसे आपने अभी मेंशन किया कि क्लाउड कंप्यूटिंग स्किल्स आपके पास ऑलरेडी पहले से थे, राइट? क्लाउड कंप्यूटिंग right, में और कुछ ऐसी नॉलेज आपको, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करूं तो लिनक्स आई होप आपको आता होगा। right. ठीक है। So और ये टेक्नोलॉजीज की थोड़ी बात करूं तो ये टेक्नोलॉजीज की अभी इंटरनली आपके पास डिमांड थी या सिर्फ लर्निंग स्टेज से आपने प्लान किया इसको पढ़ने के लिए? no. Basically, I was heard about near about 2.5 year back ओके। about the Kubernetes. ओके। So people always ask me why you are not working on Kubernetes, why you are not taking the sessions of Kubernetes. So I will decide ke yaar, what is Kubernetes basically. राइट। So I start learning myself near about few months. So after that, I think yeah, Kubernetes is a very best technology in the future. So after that, I told you that I got the reference RAM and Care Network, so ओके। I decided to take the trainings. राइट। सो अभी रिसेंटली आपको कुछ उस पर एनवायरनमेंट में काम मिला टेक्नोलॉजी के ऊपर? Yeah, recently I'm working in a basically I cannot expose the customer name, but नो इशू। my background is from telecom industry. So right now I'm working basically one international and one Indian brand. ओके। So basically I'm राइट, समझ doing गया। two kind of things. One is Tanju Kubernetes and one is our core Kubernetes. ओके। So I'm basically deeply working on these things. राइट। सो अभी इसमें एक चीज़ आपने मेंशन की थी टेलीकॉम में भी, तो आई होप आप क्या समझते हो टेलीकॉम में भी क्यूबरनेटी का कुछ रोल है? जो लोग इसमें जो टेलीकॉम बैकग्राउंड से आते हैं उनके लिए क्या सजेशन है आपका कि भाई ये चीज़ें आपको पढ़नी चाहिए या कैसा है? I can suggest that people should complete all three certification one by one, and CK is very compulsory and CKAD also compulsory because CKAD give you basically administration level task or administration tasks related knowledge. Or if you talk about CKS give you in-depth working like a security related info details, you can say. राइट। तो उसके बाद आई थिंक टेलीकॉम में भी आप बता रहे हो कि इसका इंडस्ट्री में काफ़ी यूज है। Right. जब हम ये लर्निंग स्टेज से इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं क्यूबरनेटी वगैरह को,
Mhm. तो कुछ ऐसे स्किल्स आप बता दो लोगों के लिए कि भाई ये एटलीस्ट आपको इससे पहले ये आना चाहिए, आपके अकॉर्डिंग आप क्या फील करते हो? See, according to me, at least you should have basic knowledge about Linux, ओके। how Linux work, ओके। or other technology you want to be moved, then up to you if you have knowledge. But if you talk about Kubernetes core, then you should have knowledge about basic Linux. राइट। Otherwise, you can survive, but most of this time you are facing some like you can say legacy in your knowledge, or I cannot हम्म। explain okay, what kind of thing. I don't want to say हाँ, ऑब्वियसली anything, एक्चुअल but you कंटिन्यूस। should at least have knowledge about RSC or RSCA. You are correct. Everywhere, like whenever you get the work over the Kubernetes, so underline continuous technology, you will get underline Linux OS definitely. Right. ओके। सो ये भी ठीक बोला आपने। उससे पहले एक कुछ ऐसा टेलीकॉम में अभी भी कंफ्यूजन है, हालांकि कंटिन्यूस टेक्नोलॉजी तो इट हैज अडेप्ट एवरीवेयर, चाहे आपकी कंपनी क्लाउड बेस्ड Right. हो, आपकी कंपनी ऑन Right. प्रेमिसेस काम करती है, ये तो Right. टेक्निकली बात है, मैं काफ़ी बोलता रहता हूँ लोगों से। बट फिर भी लोग Right. जानना चाहते हैं आपकी साइड से, जैसे यू आर कमिंग फ्रॉम टेलीकॉम बैकग्राउंड। ओके। Mhm. सो इज देयर एनी यूज केस अकॉर्डिंग टू यू कि भाई टेलीकॉम में देखो यार ये पहले प्रॉब्लम थी हमारे लिए, जैसे 5G टेलीकॉम, अभी ऐसा बोला जा रहा है कि 5G नाउ मूविंग ऑन कंटेनर। ओके। Right. और क्यूबरनेटी भी कंटेनर टेक्नोलॉजी को मैनेज करता है। Right. तो कुछ ऐसा बता पाओ एक कोई एक सिंगल लाइन में कि देखो यार ये टेलीकॉम में कंटेनर टेक्नोलॉजी यहाँ फिट है, कुछ ऐसा कोई नाम लेके प्रोडक्ट का। See, basically, if I talk about telecom industry level, so you guys can think before introducing Kubernetes. So most of the time we are buying the hardwares, we are buying the telecom devices. If you think like radio devices or other things, but after introducing the Kubernetes, they reduce the cost of your hardwares. And right now, they are only dependent on the basically radio device RA. So it's a basically huge change after introducing Kubernetes in telecom industry. राइट। ओके, गॉट इट। प्रदीप, एक लास्ट पॉइंट मैं आपसे पूछूंगा। जनरली लोगों की ये पॉजिटिविटी नहीं रहती कोर्स में हमेशा, दे थिंक कि कंटेनर्स टेक्नोलॉजी जो लर्निंग स्टेज में पढ़ने आते हैं वो डिफरेंट है और बाकी प्रोडक्शन में जब यूज़ करेंगे डिफरेंट है। तो आप क्या समझते हो, लर्निंग के बाद आपको कॉन्फिडेंस आया कि हाँ यार मैं प्रोडक्शन में काम कर सकता हूँ आराम से? कितना लगता है आपको कि? See, when I start my course on that time, I was feel care what I am doing. I'm not able to get the right details. But when I move on Docker in depth or Docker Kubernetes with the help of Ram, giving the sessions us. So after complete my certifications, which I get the more details in the certifications. So after that, I got the work because my seniors took my interviews. They check my knowledge. I know about the what is secret, what is scaling, what is Helm, how Helm work. Like if I talk about secrets, so in a production, these things are come. You can say in a day or in a week in your life. राइट। सो एक एक फीडबैक मैं आपको भी दूं आपका प्रदीप, आप जिस बैच में आई थिंक थे, आई रिमेम्बर कि Yeah. एक्सेप्ट ऑफ यू बाकी सब लोगों ने सिर्फ क्यूबरनेटी का पहला जो ट्रैक होता है CKA, आई थिंक वहीं Yeah. तक वाइंड अप किया था। बट आपका आई थिंक Okay. खुद की लर्निंग भी थी, आपका पॉजिटिविटी बहुत अच्छा था, क्लास में देखा है मैंने कि आपने तीनों सर्टिफिकेशंस को लेके अप्रोच किया। तो Right. आई थिंक आप सिंगल ही कैंडिडेट हो मेरे अकॉर्डिंग, वहाँ पे मैं देखा हूँ उस बैच में, तो उसमें आई थिंक सबने CK एग्जाम निकाला है, CK के बाद ही उन्होंने अपना कहीं ना कहीं कुछ मूवमेंट ले लिया। तो ये भी पॉजिटिविटी थी कि इस टेक्नोलॉजी पे आपको बिलीव है कि हाँ यार ये इसका स्कोप अच्छा है मार्केट में और हमको तीनों एग्जाम निकालने चाहिए, राइट? Yes, अभी Ram. I want to add one point more on this because I discuss about you multiple times. I disturb you in your batches. So
Basically, if you are not supporting, then I think I'm not able to complete my sessions or my certification. But it's my luck. With the help of you, I get complete my all the certifications. Thanks, thanks. राइट राइट थैंक यू It's very thanks from my heart to you. थैंक यू प्रदीप प्रदीप लास्ट पॉइंट बस अभी एज एक्सपीरियंस आपका पर्सन अब आप बात कर रहे हैं मुझसे 13 का आपका एक्सपीरियंस है अराउंड कुछ बातें जो आप बोलना चाहते हो लोगों के लिए जो उनका एक्सपीरियंस 10 से 12 साल हो चुका है आईटी में बट अभी भी कुछ ऐसी गलती करते हैं वो लोग जो आप उनके लिए हाईलाइट करना See, चाहते guys, okay, from my side, I convey my message to my all the colleagues who uh, want to change in your daily work. He want to kick on his technical life or his life also. I think they should move on Kubernetes because before Kubernetes, I'm thinking Kubernetes nothing. But after taking the sessions and I'm working in Kubernetes on the in-depth level, then I think Kubernetes is a robust product. हैं राइट I'm basically I have no word to say about Kubernetes यस मैं भी because मानता हूँ I क्योंकि अभी see, कमिंग ब्राइट इसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है और कमिंग पूरा right, मार्केट कंटेनराइज होने वाला है हो भी चुका है ऑलमोस्ट near about 10 to 15 years Kubernetes ही चलने वाला survive in है the industry without राइट any faults. राइट ओके सो आई होप आपकी जो बातें हैं पॉजिटिव बातें हैं सबको भी ये बेनिफिट देंगी प्रदीप I ओके hope so. थैंक यू प्रदीप थैंक यू Thank you, sir. Thank you.